Yesterday we had discussed about the crystal lattice, and today we are going to discuss on that point. Means we are going to continue that point in arrangement form. Definition of crystal lattice, that is regular arrangement of points in 3D shape, 3D space, sorry, 3D space is called lattice. Hashtag 2. These points are called lattice points and represent constituents particles. ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल और आयंस. नेक्स्ट इज the geometry of the lattice. The geometry of the lattice is brought out by joining lattice points together by straight line. Okay, now we are going to discuss about the unit cell. Unit cell. यूनिट सेल एक्चुअल में होता क्या है? द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल lattice which on repeating in 3D generates the entire crystal. Okay, means a unit cell may be referred as the smallest picture of the lattice. तो एक्चुअल में होता क्या है कि यूनिट सेल एक्चुअल होता क्या है कि किसी क्रिस्टल का एकदम छोटा पार्ट
जिसमें उस क्रिस्टल के सारे क्वालिटी, सारी प्रॉपर्टीज होती हैं. Suppose for a little time we have a cube here. This is a cubic lattice. Okay. Now this cube is cutted down into two pieces. Suppose from here, we cut it into again two parts from here. Tell me, this one piece has the property, this one piece has the property of that particular lattice, and this piece is known as unit cell. अब होता क्या है कि एक्चुअली इन सारे यूनिट सेल को एक एक करके हम यहाँ इसके जस्ट एक के ऊपर एक लगा दें तो ये पूरी लैटिस कंप्लीट हो जाती है. मीन्स कि ईच पीस ऑफ क्यूब इज सेम. And the last smallest piece, we can write here last, we can also not write here, the last smallest piece of cubic lattice is called unit cell. क्या कहते हैं इसको? यूनिट सेल कहते हैं. If we arrange same unit cell we can find लैटिस. अभी हमने आप लोगों को बताया कि सारे यूनिट सेल को अगर एक के बाद एक के ऊपर ऐसे अरेंज कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? लैटिस मिल जाता है. बोथ लैटिस एंड यूनिट सेल will be same in character.